Hello, and welcome to the online platform of Coachify. Now let's start with the discussion of today's newspaper. आपके न्यूज़पेपर में जो सबसे पहली न्यूज़ है, the newspaper is dated 13th of January. So the very first news is Supreme Court refuses to stay law on selection of CEC and EC. यहाँ पे CEC और EC का मतलब है Chief Election Commissioner and the Election Commissioner. So recently एक act पास हुआ है, okay, and according to the act, वो जो act है आपका that is an act of 2023 और उस act का पूरा नाम है EC and other election commissioners appointments, conditions of service and terms of office. So इस केस में ये जो एक्ट है इससे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इलेक्शन कमिश्नर का और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसमें थोड़े से चेंजेस हुए हैं. नॉर्मली आपके जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी. सो ये जो आपका एक्ट है 2023 का, इसने आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें जो है कुछ चेंजेस किए हैं. एंड द चेंजेस आर कि पहले आपकी सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग हुआ करते थे. फर्स्ट वाज अ प्राइम मिनिस्टर, देन यू हैड लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और अभी जो 2023 का एक्ट आया है उसने सीजीआई को चेंज करके यहाँ पे कर दिया है कैबिनेट मिनिस्टर. यानी अब जो कमेटी रेकमेंड करेगी किसको कमिश्नर बनाना है उसमें सीजीआई नहीं होंगे, दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. उसकी जगह पे एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे हु विल बी अपॉइंटेड बाय द और सिलेक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. सो इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक पिटिशन लगी थी. हाउएवर फॉर द पिटिशन ऑन द इशू आपके जो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा है दैट वी कैन नॉट स्टे ऑन अ लॉ. सो लॉ को स्टे करना जो है दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स. सो इट वाज द स्टोरी ऑफ दिस न्यूज़. एंड इस केस में कुछ एक जो लॉजिकल इश्यूज हैं वो हैं. फर्स्ट इज कि ये जो नया एक्ट है दैट गोज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर. सो दैट्स द बिग इशू. और ये जो आपका सेपरेशन ऑफ पावर है वो आता है आपकी बेसिक स्ट्रक्चर में. इट्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन विच कम्स फ्रॉम Yeshwanand Bharti case of 1973. So for the exam, what are the basics required as the basics of the election commission as a constitutional body, the name of the new act, the changes in the selection committee, पहले कौन था और अब उसमें कौन है, and the normal procedure of appointment of the election commissioners. That's it. Now the next news is India's longest sea bridge which provides a link to Navi Mumbai inaugurated by Prime Minister. ये न्यूज़ कल भी आई थी आपके कि आपका जो एक सी ब्रिज है which is going to connect Mumbai to Navi Mumbai and it is going to reduce the distance timing to reach there and it will be a journey of 20 minutes. इस ब्रिज को इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर ने and the name of the bridge is this अटल बिहारी वाजपेयी सेवडी नवा सेवा अटल सेतु. और नॉर्मली आप इसको जो अटल सेतु भी कह सकते हो. एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है दैट वाज अराउंड 20,000 करोड़ जो कि कल न्यूज़ में आ गई थी. अपार्ट फ्रॉम दैट द टोटल लेंथ इज 21.8 किलोमीटर्स जिसमें से आपका 16.5 किलोमीटर जो है वो आपका रहेगा ओवर द सी, दैट इज आपका ओवर द अरेबियन सी. सो नॉर्मली वी कैन से इट्स एन it is a repeated news. Okay, focus on the best practices as global meet on the pulses returns to India. एक global meet होती है pulses के ऊपर. And last time जो है ये जो meeting थी this was held in Sydney. And this year this meeting is going to be held in India between 14th to 17th February. और normally ये जो आपकी meeting है this will be conducted by GPC, that is a Global Pulse Confederation. And just because this meeting is going to be in India, so Indian counterpart will be NAFED, which is your National Agricultural Cooperative Market Federation of India. So GPC and NAFED are going to have the Pulses meeting in India from 14th to 17th February. So the dates are important. And normally जब ये meeting होगी 14th to 17th February
तो टेक्निकली ये जो न्यूज़ है ये वापस से आने वाली न्यूज़पेपर में, एंड देन ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. For this, for time being, the name of the global meet, the organizations that are going to host the meet, and last year ये मीटिंग कहाँ पर हुई थी, एंड इस साल जो मीटिंग होनी है उसकी डेट्स क्या क्या हैं, दैट इज 14th to 17th February. दिस मच इज इनफ, इससे कम हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज गुजरात ट्रेड समिट क्लॉक्स इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹26 lakh crore. दे आर टॉकिंग अबाउट द वाइब्रेंट गुजरात समिट, जिसका 10th एडिशन हुआ है अभी, and the 10th edition was held in the गांधीनगर. So this is a repeated news. अब इस केस में बस आपने इतना देखना है कि टोटल 26 लाख करोड़ के जो है वो इन्वेस्टमेंट्स फाइनलाइज हुए हैं, यानी उनके लिए MOU साइन हुए हैं, एंड फॉर अराउंड 41,299 प्रोजेक्ट्स का ऊपर डिस्कशन हुआ है. सो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड लंप सम अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट आपने देखना है. उसके बाद कर्नाटका लॉन्चेस युवा निधि स्कीम. सो लास्ट ईयर कर्नाटका में इलेक्शन हुए हैं, एंड इलेक्शन मैनिफेस्टो में दे टॉक्ड अबाउट टोटल 5 schemes, and this युवा निधि scheme is the last of those 5 schemes. The other schemes included are these स्त्री शक्ति है, गृह ज्योति है, गृह लक्ष्मी है, and अन्न भाग्य है. So these were total 4 schemes, and the 5th scheme is युवा निधि स्कीम. सो आपने नेम ऑफ द स्कीम्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है. एंड द युवा निधि स्कीम इज अबाउट द फाइनेंशियल एड एंड ट्रेनिंग टू ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स. इसमें उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा एंड उनको ट्रेनिंग दी जाएगी. ठीक, चलिए. आफ्टर दैट DRDO conducts successful flight test of Akash missile. So this is a मिसाइल जो आपके DRDO ने रिसेंटली टेस्ट फायर किया है. मिसाइल का नाम है आकाश, एंड दिस इज सरफेस टू एयर, इट इज लॉन्च्ड फ्रॉम द सरफेस एंड टू द एयर. इस मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया था फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज. नॉर्मली यहीं से आपके मोस्ट ऑफ द मिसाइल्स टेस्ट फायर की जाती हैं. द लोकेशन इज चांदीपुर एंड इट इज लोकेटेड इन दिस ओडिशा स्टेट. ठीक है. सो नेम ऑफ द मिसाइल, द टाइप ऑफ द मिसाइल, इट इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल, और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है. These are enough. After that, we have Science Ministry team visits Hawaii to take stock of telescope project. Okay, so there is a proposed project which is named 30-meter telescope. So यहाँ पे 30 meter का मतलब है a telescope. The telescope will have a diameter of 30 meters, and the diameter will be of the primary mirror optical, and the purpose of the telescope is to observe and study the deep space. It is a collaboration between 5 nations. First is America, second is Japan, China, Canada, and India. So if we go on the map, so on the map, this is your Canada, this is your US, we are here, China and Korea. So these 5 nations are collaborating for 30-meter telescope. और ये जो आपका 30-meter telescope है, इसके लिए जो proposed location है, that is this Hawaiian. There is one of the Hawaiian island जिसके ऊपर इन्होंने ये establish करना है 30-meter telescope. But the problem is कि आपके जो वहाँ के जो localites हैं और वहाँ कोर्ट है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करने से मना कर दिया है. सो डिस्कशंस आर ऑनगोइंग, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आपका जो ये आइलैंड्स अगर इसको होस्ट नहीं कर पाते हैं, तो जो नेक्स्ट प्रेफर्ड लोकेशन इज़ ला पल्मा इन स्पेन कैनरी आइलैंड. स्पेन का जो कैनरी आइलैंड है, वहाँ पे एक लोकेशन है ला पल्मा, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जाएगा. हाउएवर स्टिल द फर्स्ट प्रेफर्ड लोकेशन जो है आपकी वो स्पेन, and this is your Palma Island. Still, the preferred location is your Mauna Kea site in the Hawaiian Islands. So discussions are ongoing. We'll see what happens. After that, the next news is US-UK launch joint strikes against Houthi targets after Red Sea attack. So this is a continuously news. इधर हॉथी रेबल्स उन्होंने रेड सी में अटैक किया था, और उनके अगेंस्ट अभी आपकी US और UK जो है उन्होंने जॉइंट स्ट्राइक लॉन्च की है. सो इट्स रिपीटेड न्यूज़. द नेक्स्ट इज हमास इज गिल्टी ऑफ जीनोसाइड. इजराइल टेल्स द हेग कोर्ट. यहाँ पे हेग कोर्ट जो दैट इज अ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पे रिसेंटली साउथ अफ्रीका जो है उसने केस फाइल किया था अगेंस्ट इजराइल, एंड द केस वॉज ऑफ द जीनोसाइड.
So it's also a repeated news. इसके बाद the next news is Japan launches spy satellite to monitor neighborhood. So Japan ने एक satellite launch किया है. Here the name of the satellite is important और कहाँ से इसको launch किया गया है. That location is important. So first is the name of the rocket, the H2A rocket, and it was launched by your Mitsubishi Heavy Industries Limited, and it was launched from Nagashima Space Center in southwestern Japan. ठीक है. So these are the basic single question इसके ऊपर बनता है. बस आपने ध्यान रखना है कि recently जो spy satellite था वो जापान ने launch किया था. That's it. I think that's it for the today's newspaper. Thank you.